Hello everyone and welcome back to another lecture of electronic measurements and instrumentation. In the previous lecture we discussed about various voltmeter circuits, electronic voltmeter circuits, mostly FET input voltmeter circuit, a range changing voltmeter circuit, and then we started with operational amplifier voltmeter circuit. We also studied about differential amplifier voltmeter circuit or difference amplifier voltmeter circuit using transistors. But now we also know that operational amplifier can also be used as a differential amplifier. So instead of using transistor circuit in the electronic voltmeter, we can also use operational amplifier. So the outline of today's lecture will be, today we'll be studying about operational amplifier voltage follower voltmeter circuit. We'll be studying about operational amplifier voltmeter. We will be studying about voltage to current converter circuit, and then if we were left with some time we'll study about the ohm meters. Okay, so operational amplifier voltmeter. Operational amplifier voltmeter. So like previously only we studied about the difference amplifier. So difference amplifier does what? It is kind of amplifying the circuit. Previously we studied about the transistor difference amplifier transistor circuit, जिसमें जहाँ पे हम जो voltage दे रहे थे, whatever voltage we were giving, it was being amplified by a factor of 2. जो भी difference voltage थी वो 2 से मल्टीप्लाई होके, यानी कि पहले एम्पलीफाई होती थी, उसके बाद हम उसको मेजर करते थे और हमें वोल्टेज का वैल्यू आता था. ये हम किस केस में करते थे? जब हमारे इनपुट पे बहुत कम वोल्टेजेस आती थी, बहुत कम मैग्नीट्यूड की वोल्टेज आती है, और उस केस में हम क्या करते हैं? पहले वोल्टेज को एम्पलीफाई करते हैं. लेकिन उस केस में भी लिमिटेशंस है, हम ज़्यादा एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं वोल्टेजेस को इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. हम क्या करते हैं? हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं. पहले हम सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर विदाउट एम्पलीफिकेशन, यानी कि हम उसमें अभी एम्पलीफाई नहीं करेंगे voltage को. how do we measure voltage using an operational amplifier? So we already know operational amplifier को जब भी operational amplifier के दो inputs है, say VA और VB, उसके दो जो है वो saturation voltages हम उसको provide करते हैं, प्लस VCC और माइनस VE, और उसका एक आउटपुट होता है. उसका जो गेन है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶. जब हम उसको डायरेक्टली हम उसको ओपन लूप कन्फिग्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और क्लोज लूप कन्फिग्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं. मोस्टली जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं, हम उसको क्लोज लूप कन्फिग्रेशन में यूज़ करते हैं, जिसमें हम उसको यूजुअली नेगेटिव फीडबैक में एंड एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं. तो सेम वी आर गोइंग टू डू हेयर. सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आई एम कंसिडरिंग लाइक दिस. So this is the symbol for operational amplifier with two saturation voltages. One is plus VCC, another one being minus VEE. I think this is very light, so let me draw it with pen itself. Okay, so it will have one positive input and another one a negative input, then it will have one output terminal V out. Okay, so whenever we are giving it a feedback, a portion of output voltage is fed back to input voltage. Since we are giving it to negative terminal of the operational amplifier, that is why it is called as negative feedback. Okay, also if input we are, whichever input we are providing, if that we are giving to the positive terminal, so it will be non-inverting feedback amplifier. Since there is no resistive network being used from output to input anywhere, so हम इस configuration को क्या बोलते हैं? या तो हम इसको buffer बोलते हैं या तो voltage follower बोलते हैं. So voltage follower or it is your buffer circuit. What is its significance is जो भी आप यहाँ पे इसके input पे दोगे, the same you will have at the output. Why you will have the same at the output? से अगर मैं यहाँ पे input देती हूँ E, okay, so input I am giving as E, so according to this our output should be equal to E as well. Why should that be equal to E? Because in negative feedback, whenever we are connecting it in negative feedback configuration, in that case these two terminals, they are virtually shorted. Okay, they are considered to be virtually shorted together. Since they are considered to be virtually shorted together, that means whatever is the voltage here, the same voltage will be here. Say if I'm giving here input equal to E, output will also be equal to
sorry, if this is say V positive terminal and this is V negative terminal, here we are considering V positive is equal to V negative terminal because of virtual short. Okay, so at V positive we know is equal to E, that means V negative terminal will also be approximately equal to E, so they are almost vertically shorted. The resistance in this case is approximately infinite, so that means current यहाँ से almost जो IB से अगर current जा रही है, that is almost equivalent to 0. Okay, so no current is passing through it virtually. Whatever is the voltage here, so the same voltage will be here without. Now since output voltage is equal to input voltage, that means कोई amplification नहीं हुई है, output is following the input, so that is why it is called as voltage follower or a buffer circuit. So whenever we are using operational amplifier like this without any resistors, so in that case that is acting as a buffer. Now we are here talking about operational amplifier voltage follower voltmeter circuit. So obviously if it has to measure voltage, then we have to connect a voltmeter circuit. Voltmeter circuit is any PMMC instrument that we are connecting along with it. Okay, so this being RS plus RM, which is multiplier resistance plus coil resistance, and this is your PMMC instrument. So now whatever is the voltage V out that it is going to measure with respect to, this is common terminal. Okay, V output voltage it will measure, and V output will be how much? Same, equal to input voltage. यानी कि आप जो भी इनपुट वोल्टेज मेजर करोगे वो आउटपुट पे आएगी, और आउटपुट के अक्रॉस हमारा क्या लगा हुआ है? वोल्ट मीटर, और इसको डायरेक्टली मेजर करेगा. इसके एडवांटेजेस क्या हो गए? इसकी इनपुट इम्पीडेंस सिंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इन्फिनिट होती है, तो विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा सर्किटरी हमारी इसकी इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई हो गई, और उसकी वजह से हमारा लोडिंग इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल या ज़ीरो हो जाता है, एंड इस केस में एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं. So this part is your voltage follower or buffer, and this part is your meter circuit. Now what if the input voltages, or what if we want to change the range of the instrument? If we want to change the range of the instrument, that means we have to use a voltage divider or an input attenuator in the beginning of the circuit. So the same we are going to do here. That means if I am going to connect a resistive network like this, और इसके अक्रॉस में वोल्टेज दूंगी E, so that voltage will be passed through a set of resistors which can be provided here. ये सेम है जो हमने पीछे वाले केस में, जैसे ही हमने पीछे FET इनपुट वाला पढ़ा था, जिसमें फाइनली हर वोल्टेज 1 वोल्ट में कन्वर्ट होती है. वो तब जब हमारे वोल्ट मीटर की रेंज उस केस में 1 वोल्ट है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय सर्टेन फैक्टर, जिस फैक्टर की से भी हमारी वोल्टेज जो है वो कम हुई है. से दिस इज रेजिस्टेंस RA, RB, RC एंड RD. सेम हम वही कर सकते हैं. इसको RA 800 के एंड जो भी हमने वहाँ पे 60 के, 40 के, 200 के, है ना, वो वाली रेजिस्टेंसेस यूज़ की थी. 800 के, 100 के, 60 के और 40 के. सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 25 वोल्ट. इन हर एक रेंज के टाइम पे यहाँ पे इनपुट जो आएगी फाइनली वोल्टेज 1 वोल्ट की आएगी, और इस वोल्ट मीटर की मैक्सिमम से 1 वोल्ट रेंज है. और अगर हम 1 वोल्ट पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई भी मल्टीप्लायर फैक्टर यूज़ नहीं करना है. अगर इसको 5 वोल्ट्स पे यूज़ कर रहे हैं, पहले इसकी थी से 1 वोल्ट की, सो हर पॉइंट को सिंस स्केल जो है वो लीनियर है, हमें मल्टीप्लाई बाय 5 करना है हर जगह पे. अगर ये 10 वोल्ट्स है और 25 वोल्ट्स है, सो हमें सिमिलरली हर एक रीडिंग को मल्टीप्लाई बाय 10 और 25 करना है. दैट इज़ हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ रेंज चेंजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर वोल्टेज फॉलोअर वोल्ट मीटर सर्किट. ओके, सो दिस इज़ फॉर द वोल्टेजेस विच आर वेरी हाई, एंड टू गेट इट इन द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर और टू हैव अ मल्टीपल रेंज वोल्ट मीटर. सिमिलरली वी लाइक हमारा प्रीवियस कंसर्न क्या था कि हमारे पास जो वोल्टेजेस होंगी से अगर दे आर वेरी माइन्यूट,
out and we need to amplify it. इसीलिए हमने पीछे डिफरेंस एम्पलीफायर यूज़ किया था. सेम हम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, इनफैक्ट बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं अगर हमारे पास जो हम ये वाला बफर वाला पार्ट है वोल्टेज फॉलोअर वाला, सिंस हेयर वी आर नॉट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन एम्पलीफायर, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू यूज ऑपरेशनल एम्पलीफायर वोल्ट मीटर. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज amplifier. How does an operational amplifier gets converted into a amplifier is we are going to connect a set of resistances along with it. That means this is, say, simple plus VCC minus VEE. It will have two terminals, positive negative input, okay, and then there will be output. Say now output may, say if I am connecting two resistances along with it, so in that case it is going to get converted into an amplifier. So here a part of the output is, previous case में हम सीधा output को negative terminal के साथ connect करते हैं, so there is not only a part of output being fed back to the input. Here only a part of this is being fed back to the input. से यहाँ पे हम input provide कर रहे हैं और ये आपका आ गया output. Say this resistor, say this is R4, say this resistor is R3, okay. Input जो हम E provide करेंगे between this terminal, okay. Since we are giving input to the positive terminal, this is a non-inverting amplifier, okay. So it is a non-inverting amplifier. Now what is the voltage at this point? Say this is point X and voltage at point X से हम उसको Vx से denote करते हैं. Vx कितनी है, इस point पे कितनी total voltage है, using voltage division law, V out times R3 divided by R3 plus R4. That is the voltage here at this point. Say because the same voltage is being fed to this inverting terminal of this operational amplifier. But since we are using this as a negative feedback circuit, what is the property of negative feedback circuit is in an operational amplifier? That these two terminals, they will be virtually shorted. So virtually shorted, so V positive will be equal to V negative. V positive is equal to E and V negative is equal to जो यहाँ पे voltage आ रही है Vx, okay. E is like that, Vx is equal to V out times R3 divided by R3 plus R4, okay. So if I have to find out the gain कितना होता है, output divided by input, so V out divided by input which is E is equal to R3 plus R4 divided by R3, that is equal to 1 plus R4 by R3. So this is the gain of the amplifier, V out over E. So जैसे ही हम R4 और R3 के वैल्यूज़ चेंज करेंगे वैसे ही हमारा इसका गेन चेंज हो जाएगा. यानी कि अगर हमारे पास इनपुट पे जो वोल्टेज आ रही है वो बहुत कम है, उसको हम बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ दीज रेजिस्टर्स R4 एंड R5 वी कैन हैव द एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ द सेम इनपुट एट द आउटपुट. अगेन आउटपुट पे हम क्या करेंगे, अब सिंस हमें आउटपुट वोल्टेज ही मेजर करनी है, आउटपुट पे हम एक PMMC इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करेंगे. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कनेक्ट हियर a PMMC instrument like this, which is going to measure your output voltage V out. So this is voltmeter gain, okay, and it will do what? It will amplify the input signal to a suitable level for the deflection instrument to measure it. यानी कि अगर कम voltages भी होंगी ये इसको amplify करेगा by taking the suitable values of R4 and R3, and we can have the deflection, proper deflection at the deflection instrument. This was the
second part of this operational amplifier op-amp amplifier voltmeter. So this is your op-amp amplifier voltmeter. इसमें since again input impedance इसकी बहुत ज़्यादा high है. Why? Because we are using an operational amplifier. So input impedance will almost be infinite. Even if it is not infinite, it is of the order of mega ohms. So input current से IB अगर कोई input current है तो वो equal to होगी how much? 0. Since ये voltage और ये voltage you are saying it is same because they are virtually shorted, यहाँ से भी current जो है वो 0 होगी. So सारी if यहाँ से current जा रही है, जो current flow कर रही है से R4 resistor से, say if I am naming that equal to I4, तो वो करंट यहाँ से फ्लो करेगी. सिंस इस टर्मिनल से भी वी हैव अज्यूम दे आर वर्चुअली शॉर्टेड टुगेदर, अगर इस टर्मिनल से ऑलमोस्ट जीरो करंट जा रही है, इससे भी ऑलमोस्ट जीरो करंट ही जा रही है. सो दैट मीन्स ऑल ऑफ द I4 इज बीइंग पास्ड टू दिस पार्ट ऑफ द सर्किट. ओके, so I4 is passing through here and here. Now if we have to design this voltmeter, we need to have suitable values for R3 का वैल्यू कुछ होना चाहिए और R4 का वैल्यू कुछ होना चाहिए. हाउ डू वी डिज़ाइन अ सर्किट जिसके R3 और R4 के वैल्यूज़ ऐसे हों कि ये वोल्टमीटर बिहेव करेगा एज एन एम्पलीफायर एंड इट विल ऑल्सो मेजर दी. उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए. सबसे पहली कंडीशन फॉर दिस वोल्टमीटर टू बी वर्किंग फाइन इज़ दैट I4 whatever is current I4 जो पास करेगी यहाँ से, that should be much higher as compared to IB. इनपुट करंट जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होनी चाहिए और जो करंट इस रेजिस्टर R4 के थ्रू जा रही है और जो कि सेम करंट है जो रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस जा रही है, that should be much higher as compared to IB. If this condition is fulfilled, it will be work properly. Now how do we find out the values of R3? R3 कैसे find out करेंगे? हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप से अगर R3 के अक्रॉस हम लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो से VR3 है, तो VR3 किसके बराबर है? VR3 है जो करंट यहाँ से V is equal to IR. So current flowing through this is I4 into what is the resistance of this part is R3. Also we know that VR3 किसके बराबर है? VR3 इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बराबर है Vx के. ओके, Vx is how much? Whatever is the input voltage. So you can also say VR3 is equal to E is equal to I4 into R3. Okay, so in other words you can say R3 is equal to E upon I4. Okay, this is how you find the value of R3. Okay, so how we find the value of R3 is by taking the ratio of whatever input voltage that we are going to apply to the value of current which is flowing through this resistor. Now similarly we can find out the value of R4. R4 कैसे निकालेंगे? R4 is again इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है से हम लिखते हैं VR4. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R4 इज इक्वल टू हाउ मच? जितनी इसके थ्रू करंट जा रही है विच इज़ I4 इंटू जितनी इसकी रेजिस्टेंस है दैट इज़ R4. ओके, VR4 यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? ये वोल्टेज V आउट माइनस ये वोल्टेज Vx की विच इज़ इक्वल टू E. सो VR4 बेसिकली इज़ V आउट माइनस Vx that is equal to I4 into R4. Okay, so V out हम इसको VO से रिप्रेजेंट करते हैं. Vx हमारे पास इनपुट वोल्टेज है डिवाइडेड बाय I4 जो है that is the value of R4. So if we have these values we can find out the value of R4. So using these two formulae we can find out the value of resistances and we can design an amplifier, operational amplifier voltmeter. Now we are going to solve a problem based on this. Okay, the question states that an operational amplifier voltmeter circuit is required to measure a maximum input voltage of 20 millivolts. The operational amplifier current is 0.2 microamperes and the meter circuit has IM equal to
100 microamperes at full scale deflection, and Rm plus Rs is equal to 10 kilo ohms. We have to determine the value of R3 and R4. We have already found out the formula for R3 and R4. Accordingly, we'll find out the values of this by putting whatever values are given to us. So now what is given is a maximum input is required to measure a maximum input of 20 मिली वोल्ट्स, यानी कि वोल्ट मीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन होनी चाहिए 20 मिली वोल्ट्स पे. ऑपरेशनल एम्पलीफायर करंट इज इक्वल टू 0.2 माइक्रो एम्पेयर्स, यानी कि दिस करंट आई बी जो हम यूजुअली ज़ीरो लेते हैं इट इज़ इक्वल टू 0.2 माइक्रो एम्पेयर्स. ऑब्वियसली इट इज़ very small, so हम zero usually लेते हैं, but it has some value. So here IB is given to be equal to 0.2 microamperes. What other thing is given is current IM which passes through the meter, that is equal to 100 microamperes. That current is the current which is flowing through the meter, which is IM here, that is given to be equal to 100 microamperes. At full scale deflection, Rm plus Rs coil resistance plus multiplier resistance, this resistance is given to be equal to 10k. So Rm plus Rs is equal to 10 kilo ohms. We have to determine the value of R3 and R4. So if looking at the formula here, R3 is equal to E by I4. R3 is equal to E by I4. So we need to first find out E. The value of E is, it is already known to us. E is the maximum voltage it measures at full scale deflection, that is equal to 20 millivolts, that is given in the question. So E ka value we know, R we have to find out. So we need to find out the value of first I4. We have already said that I4 has a condition that I4 is much higher than IB. Since I4 is not given, if in the question it is given, it is well and good. If it is not given in the question, you have to assume its value. So आप किसी भी value से इसको assume कर सकते हो. It may be, say you can say 500 times greater than this current, 800 times, 1000 times, 2000 times. You can take any value. Say for example, I consider I4 is actually 1000 times the value of IB. It is obviously very large, it is satisfying the condition, तो हम कुछ भी ले सकते हैं इसको, but वो value ज़्यादा होना चाहिए. So IB का value हमें already पता है. IB is equal to how much? 0.2 microamperes. So that makes this value of I4 to be equal to 0.2 milliamperes. That means I4 का value कितना है? 0.2 milliamperes. हमारे पास फुल स्केल करंट का वैल्यू कितना है? 100 माइक्रोएम्पेयर्स. ऑब्वियसली यानी कि ये उससे ज़्यादा वैल्यू है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट I4 का वैल्यू हमने निकाला. अब इसको हम इसमें सब्सटीट्यूट करके R3 का वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है. E का वैल्यू था 20 मिली वोल्ट्स. ओके. I4 का वैल्यू है 0.2 मिली एम्पेयर्स. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट the value of this, so that is equal to 100 ohms. So value of R3 is equal to 100 ohms that we have found out. Second is हमें find करना है R4 का value. R4 का value is this value, V out minus E I4 R4. R4 का वैल्यू हमें निकालना है. E का वैल्यू हमें पता है, I4 का वैल्यू हमें पता है. हमें क्या नहीं पता है? V out का वैल्यू. सो V out का वैल्यू VO is equal to, ये आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू हाउ मच, जितनी इसके थ्रू करंट पास हो रही है, इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस. सो V out will be equal to IM into RS plus RM. IM is given to be equal to 100 microamperes. RS plus RM is given to be 10 kilo ohms. So this makes V out to be equal to 1 volt. So this we are going to put in this formula to find out the value of R4. So R4 is equal to V out minus E divided by I4. ओके. वी आउट हमने अभी निकाला, 1 वोल्ट के बराबर है, माइनस ई का वैल्यू हमें पता है. ई का वैल्यू इज इक्वल टू 20 मिली
volts and I4 का वैल्यू जो हमने निकाला है that is equal to 0.2 milliamperes. So solving this further, it will give you R4 is equal to 4.9 kilo ohms. So R3 is equal to 100 ohms and R4 is equal to 4.9 kilo ohms. If we make these resistances equal to this and connect it here, then this voltmeter can measure an input voltage of 20 millivolts, यानी कि जो कि बहुत कम वोल्टेज है, और उसको भी हम इसको पहले एम्पलीफाई कर पाएंगे इनपुट वोल्टेज को. ओके, सो इट विल मेजर अ मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज ऑफ 20 मिलीवोल्ट्स, और इससे कम भी मेजर कर सकता है. आउटपुट करंट जो है वो हमारे पास है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की करंट 2. सो whenever we are doing these kind of measurement, we can have a voltmeter which is able to measure currents from 0 to 20 millivolts. पीछे वाले हमने जब भी किए हैं, we that is in the range of volts. So this, for measuring low voltages, we can first amplify it and then measure it accurately. So this is how your operational amplifier voltmeter works. Now there is another thing that we can do to convert it into another type of voltmeter, which is voltage to, which is the third part of our lecture, which is voltage to current converter वोल्ट मीटर. अब हमारे पास अगर ऑलरेडी ये वाला वोल्ट मीटर है, तो हमें वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर वोल्ट मीटर क्यों चाहिए? वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर वोल्ट मीटर इसलिए चाहिए से हमें कोई सर्किट में मेजर करना है, से वी आर डूइंग रिमोट सेंसिंग. ठीक है, हमारे पास डिवाइस एक जगह पे पड़ी है जहाँ पे हमें वोल्टेज मेजर करनी है, और वोल्ट मीटर जो है इट इज़ एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट. सो वी ऑलरेडी नो जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस वोल्ट मीटर की बढ़ती जाएगी, उसका वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो वोल्टेज हम मेजर करेंगे वो एरर वाली आएगी. ज़रूरी नहीं है जो वोल्ट मीटर सर्किट हो वो हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बिल्कुल साथ में लगा हुआ हो. तो वोल्टेज, अगर हम कोई ऐसी चीज़ मेजर करेंगे जो चेंज नहीं हो रही है, विच इज़ ऑब्वियसली करंट ओवर अ लार्ज डिस्टेंस रिमेन सेम्स, व्हाट चेंजेस इट्स वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. सो अगर हम ऐसी चीज़ के साथ इसको वी नीड अ बेटर रिजल्ट, सो इन दैट केस वी वुड वांट टू कन्वर्ट दिस voltage into current and then measure it like that, so that there is a error-free measurement of voltage. So how do we do that? So instead of connecting the voltmeter here, if we connect the voltmeter circuit just in this circuit, so in that case we are doing what? We are actually measuring I4. So in that case हमें जब अगर हमारा ये वाला circuit, this part of the circuit is even far from that place, since it is connected in negative feedback mode, हमेशा ये वाला voltage will be equal to ये वाला voltage. So the voltage drop in that case is not proportional to the voltage, it is proportional to the current and the resistance. So current इसके through और resistance इसके through जो है वो हमेशा same रहेगा. तो ऑब्वियसली जो हमारा वोल्टेज हम मेजर करेंगे वो भी सेम रहेगा, इवन इफ वी आर मेजरिंग इट एट अ फार्दर डिस्टेंस. सो वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द सर्किट जस्ट बाय पुटिंग वोल्ट मीटर सर्किट को अलग से कनेक्ट करने के बजाय हम जस्ट उसको फीडबैक लूप में कनेक्ट करेंगे. दैट इज ऑल वी हैव टू डू. सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू कनेक्ट द मीटर सर्किट. R4 की जगह R3 अपनी जगह रहेगी. ये हमारा इनपुट है. प्लस VCC माइनस VEE, यहाँ से करंट जाएगा IB विच इज़ नेग्लिजिबल, इसके थ्रू पास करेगा करंट IM, सेम करंट जाएगा यहाँ से. ओके, यहाँ से करंट जाएगा IB अगेन विच इज़ वेरी स्मॉल. सो यहाँ से भी ऑलमोस्ट जो करंट फ्लो करेगा, से अगर I3 बनाएंगे तो I3 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू IM. ओके,
So now this voltmeter is going to measure the voltage. Which voltage? Between this point and this point. Otherwise it was measuring the voltage up to from this to the common terminal, यानी कि इतनी voltage measure कर रहा है. अब ये सिर्फ voltage measure कर रहा है इतने part की voltage measure करने से ये क्या होगा? We've already said current I3 जो resistance R3 में से flow करेगा वो बराबर होगा किसके? IM के. IM जो मीटर के थ्रू करंट जा रहा है, so it is meter current is same as the current which is flowing through this part. So if I have to find out its drop, whatever is the voltage drop at this point, so that is equal to VR3 is equal to I3 into R3. Okay, so I3 will be equal to how much? VR3 divided by R3. VR3 का वैल्यू कितना है? VR3 सिंस हमने इसको नेगेटिव फीडबैक में कनेक्ट किया इज सेम जो यहाँ पे है बिकॉज दे आर वर्चुअली शॉर्टेड टुगेदर. सो VR3 इज इक्वल टू E only, so it will be E divided by R3. I3 किसके बराबर है? IM के, so IM will be equal to E over R3. R3 will remain constant. E is the input voltage which is always जो हमें measure करनी है, so it is constant for a particular reading. So when this and this is constant, IM will always be constant. So ये voltage जो हमेशा हमारी measure करेगा वो exact measure करेगा. Even if ये वाला portion थोड़ा दूर है, but since ये एक feedback loop में आ रहा है, हम आगे पढ़ेंगे प्रिसिशन रेक्टिफायर, उसमें ड्रॉप नहीं होता है 0.7 वोल्ट्स का जैसे कि एक नॉर्मल रेक्टिफायर में होता है ड्रॉप 0.7 वोल्ट का. वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम इसको फीडबैक लूप में कनेक्ट कर रहे हैं और फीडबैक लूप में कनेक्ट करने की वजह से इस पॉइंट और इस पॉइंट की वोल्टेज सिंस सेम हो जाती है, तो उसकी वजह से ये दिस पोर्शन बिकम्स अ कांस्टेंट वोल्टेज. करंट भी इसके थ्रू कांस्टेंट जा रहा है बिकॉज ऑलमोस्ट जीरो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस. सो वोल्टेज अराउंड दिस part will always remain constant, and even if we are measuring voltage here, since the current IM it is kind of voltage to current converter, because इसमें से obviously PMMC इंस्ट्रूमेंट में से जब करंट IM जाएगा तो ये उसकी अक्रॉस डिफ्लेक्शन मेजर करेगा, और IM दो कांस्टेंट चीज़ों का रेशियो है, सो इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. सो वोल्टेज जो है दैट विल बी एग्जैक्ट वट एवर बी द डिस्टेंस बिटवीन द मेजरिंग पॉइंट और इस मेजरिंग पॉइंट यानी कि इधर पे और आपके इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कितना भी डिस्टेंस हो, देयर विल बी नो ड्रॉप बिकॉज इट इज़ इन द फीडबैक लूप. सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर. जिसमें हम पढ़ेंगे सीरीज ओम मीटर पहले. So analog electronic instruments में क्या होता है? It contains a moving coil deflection meter. There is no reason why they cannot be made to function as an ohm meter. क्योंकि एक ओम मीटर में अगर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी का हमें वैल्यू पता है, हमने कितनी वोल्टेज उससे दी है. अगर हम जिसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है उसके अक्रॉस हम करंट मेजर करेंगे, वोल्टेज हमें पता है उसके अक्रॉस कितनी है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस through Ohm's law. Okay, so if we know the voltage, if we know the current, so we can obviously find out the resistance. The same logic applies here in electronic instruments as well. अगर हमें किसी के across जो है voltage पता है, उसके across जो current पता है, हम उसकी resistance निकाल सकते हैं. So एक series ohm meter की कुछ important पार्ट्स हैं इंस्ट्रूमेंट के. तो उसमें आता है, सबसे पहले हमारे पास चाहिए होती है हमें एक बैटरी. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टैंडर्ड रेजिस्टर. थर्ड इज रेजिस्टिव एलिमेंट जिसकी हमें रेजिस्टेंस मेजर करनी है. And fourth important thing being electronic voltmeter.
If we have these four things, we can measure the resistance of any resistive element. So how are these connected together to form an ohm meter? So say I'm using a battery this which is 1.5 volts, okay, then I'm going to use certain standard resistor RS, okay, एंड देन मेरे पास एक रेजिस्टिव एलिमेंट ऑब्वियसली पैरेलल में होगा जिसके अक्रॉस मुझे रेजिस्टेंस मेजर करनी है, से वो है आर एक्स, एंड दैट आई एम गोइंग टू कनेक्ट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, और इनके अक्रॉस हम करेंगे कनेक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर जो इसके अक्रॉस की वोल्टेज मेजर करेगा, से ई है इसके अक्रॉस की वोल्टेज। और इस वोल्ट मीटर को सिंस हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं वो है 1.5 वोल्ट्स की, सो इस वोल्ट मीटर की रेंज जो है वो होनी चाहिए 1.5 वोल्ट्स की। जब हम इस वोल्ट मीटर को इस रेंज पे सेट करते हैं, सो इन दैट केस वी आर एबल टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस resistance of this resistive element using this. So this arrangement, this is actually your ohm meter, a series ohm meter. So now how does this measure the resistance of this resistive element? This is unknown obviously, इसका हम कोई specific value use करते हैं, से ये 1K का resistance है, standard resistance है, it can be any different value also. Say for example in this case we will consider this to be equal to 1 kilo ohms. बैटरी का वैल्यू हमें पता है 1.5 वोल्ट्स है, और हमारे पास इसकी रेंज भी पता है, मैक्सिमम वोल्ट मीटर की है 1.5 वोल्ट्स। दैट मीन्स वोल्ट मीटर की रीडिंग से हम नीचे से लेंगे और ओम मीटर की रीडिंग हम ऊपर से लेंगे। सो इट विल शो यू मैक्सिमम ऑफ 0 टू 1.5 वोल्ट्स, और ये स्केल लीनियर होगा, ठीक है। तो यानी कि ये सेंटर में हमारे पास दिखाएगी 0.75 वोल्ट्स, ओके। यहाँ पे ये इसका भी हाफ दिखाएगी और यहाँ पे ये इसका भी इन दोनों का मीन दिखाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है हमारा इट इज़ योर इट हैज़ अ लीनियर स्केल, ओके। Now what happens is say if this resistance is ओपन सर्किटेड, यानी कि यहाँ हम रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, तो वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी हाउ मच, जो वोल्टेज ऑब्वियसली सो जब ये रेजिस्टेंस हम निकालते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये इज these 2 points A and B they become open circuited, and if they are open circuited इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जितना इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगा। सिंस ओपन सर्किट है कोई करंट फ्लो नहीं करेगी इसके थ्रू, that means maximum voltage will be here, that is equal to 1.5 volts. That means whenever we have a voltage of 1.5 volts, that means उस टाइम पे हमारा unknown resistance की resistance कितनी है, infinite. Open circuit means infinite resistance, okay. So when the second case can be when it is short circuited, that means point A and point B are short circuiting and we find the voltage here. तो voltage इन दोनों के बीच में कितनी आएगी, 0, और short circuit resistance means इसकी resistance का value 0 है, so there is 0 value. Now this was first case 1 when your Rx is open circuited. Open circuited means Rx is equal to infinite value, that means voltage across it E is equal to maximum voltage, that is 1.5 volts. There is case second when your Rx is short circuited. Rx is short circuited, that means Rx की कोई resistance नहीं है, it is not providing any resistance, that is 0 ohms. Also उसके across 0 across voltage क्या आएगी, 0. So these are the two extremities of this ohm meter. So now there can be a third case as well जिसमें Rx जो है that is between open circuit and short circuit, इन दोनों के बीच में है, दिस इज द केस थर्ड. सो उस केस में रेजिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि उस केस में जो वोल्टेज है दैट विल बी बिटवीन 0 एंड
1.5 volts. So in that case obviously अगर हमारे पास यहाँ voltage आ रही है 1.5, जब voltmeter नहीं है, so these two resistances they are basically connected in series. When resistors are connected in series, this voltage will be divided between this resistor and this resistor. That means we can use a voltage division law. So according to voltage division law, what will be the voltage across this resistance? Rx की across voltage है E, and E will be equal to how much? Total voltage जो बैटरी की है EB से okay resistance of the element जिसके across हम measure कर रहे हैं divided by the entire resistance, that is Rs plus Rx. This will be the expression जिसको हम evaluate करके center के values निकालते हैं. अब हमसे सेंटर के से अगर हम बोलते हैं आर एक्स इज इक्वल टू आर एस हमने लिया है 1 के यहाँ पे. सो ई विल बी इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज है 1.5 इंटू आर एक्स हमने बोला है आर एस के बराबर है, यानी कि बोथ आर 1 के. सो दिस विल बी 2 के. So this will be equal to 0.75 volts. So 0.75 volts यानी कि सेंटर रीडिंग में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा? रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा सेम जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू है. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने 1 के रखा है, तो यहाँ पे भी ये 1 के का वैल्यू आएगा. Similarly you can find out the other markings using this formula. EB का वैल्यू आपको पता है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, वोल्टेज की रीडिंग आप वोल्ट मीटर से you can find out the value using this. So unknown, the only unknown is Rx, and you can find out, you can write down the scale readings for various values. The only thing to remember is voltmeter का scale जो है वो linear है, और जो आपका ओम मीटर का स्केल है, ओम मीटर स्केल इज नॉन लीनियर. This was for a simple one. Similarly, if we can have a multiple range ohm meter also, but if you want to change the range of this ohm meter, what we need to do is we need to change this value of standard resistor. So अगर हमारे पास कभी भी मल्टी रेंज ओम मीटर आता है, उस केस में असल में क्या होता है, हमारा जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रहा होता है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. सो फर्स्ट केस में से 1 मेगा ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं, देन 100 किलो ओम का, देन नेक्स्ट केस में से 10K का, नेक्स्ट केस में 1K का, नेक्स्ट में 100 ohms का. So like that we can have different ranges of this different values of this standard resistor, जिसकी वजह से जो हमारा रेंज है वोल्ट मीटर का वो चेंज हो जाएगा. So what this is, there is a rotary knob here. बैटरी का वैल्यू सेम रहेगा, जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही वोल्ट मीटर का मैक्सिमम रेंज होगा, यानी कि ये इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे 1.5 वोल्ट्स होगा. Okay, so whenever this switch knob is changing, this is actually a range selection switch. So whenever we want to change the range of the ohm meter, we can just change the position of the knob from B to C to D to E और F. जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड रेजिस्टर चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारी रेंज चेंज होती जाएगी. ऑल्सो मिड पॉइंट हमें पता है इज इक्वल टू वट एवर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने यूज़ किया होगा. अगर हमने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 के यहाँ पे यूज़ किया तो इसकी रेंज भी अराउंड 1K के आसपास ही होगी. थोड़ी ज़्यादा होती है उससे से 2, 3, 4 का वैल्यू, और यहाँ पे क्योंकि स्केल के बीच में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाते हैं, लास्ट वाले वैल्यू में से 5 से लेकर इन्फिनिट के बीच में. सो ये स्केल का वैल्यू रीड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. सो जनरली हम ये वाला स्केल का वैल्यू यूज़ करते हैं, इसीलिए हम रेंज इसको मान के चलते हैं.
सो अगर मेरा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1K का है तो ओम मीटर की रेंज भी मैं 1K कंसिडर करती हूँ। अगर मेरा स्टैंडर्ड रेजिस्टर जो है 1 मेगा ओम का, तो रेंज भी मैं 1 मेगा ओम लेके चलती हूँ, क्योंकि सेंटर वैल्यू जो मेरा है वो 1 मेगा ओम का है। यहाँ पे से 0.7 मेगा ओम हो सकता है, 0.2 मेगा ओम्स हो सकता है, 0.1 एंड लाइक दैट। ज़ीरो से लेकर यहाँ तक वैल्यूज़ पढ़ना ईजी है। यहाँ के बाद जो है स्केल बहुत ज़्यादा नैरो होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाते हैं, और दिस पार्ट ऑफ द स्केल इज़ ऑलमोस्ट we cannot decipher it, so that is why we use this as the range. This center value, that is considered to be the range of the ohm meter. Okay, so this is about today's lecture. We'll study related topics and do some examples based on this in the next lecture. Thank you.